What is IELTS exactly? And how do you prepare? Who is it for? How do I prepare for IELTS? What does it looks like? Let's find out together in this video. Hello T, welcome to my YouTube channel and Assalamu alaikum. Today's video is very important and educational. It's about IELTS. I was checking about IELTS and there are so many myths about IELTS and so many misconceptions and so many people get low band just because they follow these very wrong instructions and very wrong guidelines. Okay, today I'm gonna clear some points. Some people don't know about this, but today's video is gonna very helpful for you guys. If you really want to know what is IELTS and how you prepare, just stay with me in this video. First of all, if you are new to IELTS, you have a lot of questions like who is it for? What does it looks like? How do I prepare for IELTS? Even how do I book that test? There are a lot of questions. Today I'm going to answer all these questions in this video so you know whether IELTS is for you or not. You know, IELTS is not for everyone. So if people think IELTS everyone can attempt this exam, no. You can't if your English is not good. Now I'm going to explain in which sense your English is not good. Like, for example, actually, I'm going to explain later. First, I describe what is IELTS exactly. IELTS is International English Language Testing System. In starting, I was talking about the myth. So the myth is so many people think it's by British, and of course it's a British council, but so many people think I have to speak like British English, and if I can't do exam. No, it's not like that. First of all, it's not a British English, okay? Three organizations combined and they make this test, like Cambridge English, IDP, and British Council. This test is written by Cambridge. IDP and British Council delivered this test. So this is not like you have to speak British English. It's not like that. You can speak local English, you can speak American English, you can speak British English as well. In this test, it's not a very difficult, like in speaking sense, okay? Is that clear? Okay, before describe all these questions and how to prepare, how to give exam and how it looks like, first of all, I'm gonna describe some points like IELTS is not for everyone. I told you before, इसका मतलब ये है कि IELTS सबके लिए नहीं बनाया गया. It's mean, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और आप IELTS पास कर सकते हैं, so no, you can't, okay? अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, first of all, you have to work on it, you have to improve your English first, you have to go level up, okay? And then you prepare IELTS and then you are ready to give IELTS exam. Otherwise, no, you can't. On the other hand, some people think मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुझे आइल्स की तैयारी करने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही जाके आइल्स का पेपर दे सकता हूँ. It's not like your English is super good, you are good in speaking, you are good in writing. It's not like you just go and attempt your exam. You are not gonna get high bands. I'm sure about it. You have to prepare for IELTS first before going for your test. किसी गोरे को बगैर प्रिपरेशन के आप IELTS एग्जाम में बिठा दो तो वो भी 5 से ज्यादा बैंड्स नहीं ले सकेगा. You know why? Because उसकी मदर टंग इंग्लिश है, वो माँ के पेट से इंग्लिश बोलता हुआ पैदा हुआ है. तो अब आप सोचेंगे कि why his English is so good, so why it's not about only English. That's a point I'm trying to explain you guys. This is not about you have a good English, you are good enough to go and attempt exam without preparation. You have to prepare IELTS first before you go. ये दो points मैंने discuss कर दिए. First thing, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो भी आपको IELTS की तैयारी करनी पड़ेगी. Second thing, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, you have no enough confidence to speak in front of other person. I hope आपको ये दो points clear हो गए होंगे. First, कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके
पेपर देने ना चले जाएं बगैर प्रिपरेशन के। एंड सेकंड, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लाइक you are not enough confident to speak in front of others like continuously, so it's mean you can't do this. First you have to work on yourself, you have to work on your English, you have to prepare, you have to prepare basic English, you have to practice a lot of practice, and then you go and give your exam. Like not like just go, because it's not, you know guys, in Pakistan and also in other countries, it's not very cheap. Okay, you just go and attempt. It's a expensive test. It's not easy and it's not a cheap as well. Okay, question number one. It's a myth. IDP test is more easy than a British council. No, it's a myth, guys. I told you before, कैम्ब्रिज ने ये टेस्ट लिखा है. जब कैम्ब्रिज ने ये टेस्ट लिखा है, ITP and British, they just work for delivering. Okay, वो सिर्फ डिलीवर करते हैं. लिखा कैम्ब्रिज ने है. अगर कैम्ब्रिज ने लिखा है तो वो दोनों को सेम ही टेस्ट देगा. वो दोनों के टेस्ट सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे. ओके, सो ये एक मिथ है कि IDP टेस्ट ज्यादा इजी होता है ब्रिटिश के. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. हाँ, ये एक चीज हो सकती है कि आपकी स्पीकिंग में जब आपका इंटरव्यू होता है, उसमें अगर आपको ब्रिटिश में कुछ एक्सेंट से बोला जा रहा हो, या IDP में एक नॉर्मल थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट द टेस्ट इज completely सेम. Now I'm going to discuss how many types of IELTS test. There are two types. One is academic and the second one is general. Academic one is for students. Academic test वो होता है जिसमें अगर आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो आउट ऑफ कंट्री, और आप किसी एजुकेशनल पर्पस पे जा रहे हो, उसके लिए आपका एकेडमिक टेस्ट होगा. एंड योर जनरल टेस्ट is for your job and for other purpose. Okay, and if you are a student, so you must do academic IELTS test. So now I'm going to explain how this test looks like. There are 4 parts in this test: reading, listening, writing, and speaking. Listening and speaking are same in academic test and in general test. Reading and writing are a little bit different. तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग ये बेसिकली होता क्या है. ओके, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट इफ यू रियली वांट to know about IELTS, you must watch this video. Okay, first of all we're gonna discuss about listening. Listening basically ये होता है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया, IELTS is not just about आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. अब यहाँ पे बात आती है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों. Okay, basically it माना जाता है कि IELTS is an English test, so it's easy. It's like if your English is good, you can go. No, there is a listening and there is a reading section that is difficult. You have to prepare for these sections before you go. Like listening, first I'm gonna explain listening test. आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, आप हेडफोन्स पहनोगे और उसके बाद ऑडियो प्ले किया जाएगा. साथ में आपके क्वेश्चंस होंगे और एक ऑडियो प्ले किया जाएगा. आपने उस ऑडियो को सुन के उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, MCQs हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नॉर्मली फिलिंग ब्लैंक्स होते हैं और MCQs वगैरह होते हैं उसमें. ठीक है, तो आपने उसमें कुछ जैसे कि कुछ हेडलाइंस होती हैं, उसमें ये कौन सी है, ये कौन सी, इस तरह से करके एक पेपर होता है. उसमें आपने वो रिकॉर्डिंग सुननी है और रिकॉर्डिंग सुन के आपने उसके आंसर्स करने हैं. ओके, अब इसमें क्या है कि इसमें वो ये देखना चाहते हैं कि आप अगर कोई बात कर रहा है आपसे इंग्लिश में, तो आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो. इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्पीक एंड राइट इंग्लिश, इट्स अबाउट लाइक हाउ you listen, how you communicate, right? So अगर आप अगले बंदे की बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे. So इसका मतलब ये होता है, वो अपनी इसमें ये नहीं होता कि वो बहुत ही ज़्यादा एक एक्सेंट में, ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट में और बहुत तेज़ स्पीड में, ऐसा नहीं होता. नॉर्मल स्पीड होती है. You can easily understand if your English is good, and they maybe use some tricky words and some double meaning words like for example, if pizza, they're talking about pizza, they're not gonna say directly pizza. वो कहेंगे bread, उसके ऊपर chicken है, wedges है, this and that sauce. तो आपको ये कंसीडर करना अपने माइंड में कि ये पिज्ज़ा की बात हो रही है. ओके,
So it's about listening. Reading section is also like you have a paragraph. You remember आप जब मैट्रिक एफएससी में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता था और आपने उसके कुछ एंड पे क्वेश्चंस होते थे और आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के, उस पैसेज को पढ़ के आपने उसका आंसर्स नीचे लिखने होते थे। यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा आपको, आपने उसको अच्छे से रीड आउट करना है और उसके बाद उसके जो आंसर्स नीचे दिए गए हैं वो फिलिंग ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा, वो एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। आपने उनको पढ़ के और आपने नीचे उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है? ये चीज़ होगी। रीडिंग में ये है। इट लुक्स लाइक वेरी इजी बट इट्स नॉट इजी। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट इजी. It looks like, and the most difficult part in IELTS is reading, because they're gonna give you a limited time and you have to complete all these answers. It's not that much easy, because I told you before, if there is a pizza in the paragraph, there is no pizza. अगर क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है कि पिज्जा के बारे में, तो in paragraph you can't find a pizza, the word pizza. You have to find out, okay, there's a bread in another form. Synonyms, they use a lot of synonyms. It's not as simple. You have to, use your mind. But the problem is there is a limited time and you have to figure out all these answers in this limited time. So that is really tricky. Cambridge books available है online, आप वहाँ से practice कर सकते हो, and you need a lot of practice, especially for reading and listening. Okay, now I'm gonna discuss about writing. Writing, they're gonna give you one essay topic, and you have to write 250 words, okay, in 40 minutes. तो उसमें कोई ऐसी हो सकता है, अब इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे वो कहेंगे कि आप अगर कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल विलेज लाइफ इज बेटर और सिटी लाइफ इज बेटर, यू हैव टू कंपेयर। आपको सिटी लाइफ अच्छी लगती है तो क्यों, और अगर आपको विलेज लाइफ अच्छी लगती है तो क्यों, यू हैव टू कंपेयर। आप जिस लाइफ को प्रेफर कर रहे हो आपने उसके बताना है कि क्यों, इसका क्या रीज़न है कि आप इसको प्रेफर कर रहे हो, और अगर जिसको आप प्रेफर नहीं कर रहे हो तो उसके डिसएडवांटेजेस या जो भी ड्रॉबैक्स हैं आपने वो भी लिखने हैं, ठीक है? ये होता है राइटिंग में। उसके अलावा ग्राफ दिया जाएगा, चार्ट दिया जाएगा, आपने उसको जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। तो बेसिकली राइटिंग में ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये आपने करनी होती हैं। अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँगी कि राइटिंग में बेसिकली क्या क्वेश्चंस कौन-कौन से, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। आई जस्ट वांट टू गिव सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ आइल्स इन दिस वीडियो, बट मैं सिर्फ इस वीडियो में एक बेसिक बताना चाह रही हूँ, मोटी-मोटी चीज़ें, जैसे कि जिसे कहते हैं मोटी-मोटी चीज़ें आइल्स के बारे में। जो डिटेल वीडियो है उस पे हम अलग से बना लेंगे, राइटिंग का सेक्शन, लिसनिंग सेक्शन एंड ऑल सेक्शंस, ओके? सो दिस इज़ लाइक वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आइल्स। इसी तरह स्पीकिंग होता है। स्पीकिंग में जो है स्पीकिंग में वो आपसे इंट्रोडक्शन करते हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ बेसिक आपने बोलना होता है उनके सामने, ठीक है? यू मेक श्योर योर वर्ड्स, योर सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली राइट एंड यू अवॉइड mistakes, and you must be confident in front of the examiner. एंड या और ये जो टोटल टेस्ट होता है ये 2.5 घंटे का होता है, ठीक है? 2.5 घंटे का पेपर बेस भी आप दे सकते हैं और कंप्यूटर बेस भी दे सकते हैं ये टेस्ट। पेपर बेस जो टेस्ट होता है इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट। अगर आप बहुत अच्छे हैं राइटिंग में, पेपर पे लिखने पे, सो यू मस्ट गो फॉर पेपर बेस। बट अगर आपकी कंप्यूटर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एंड यू आर वेरी गुड इन टाइपिंग, योर टाइपिंग स्पीड, बेसिकली इट्स नॉट लाइक यू हैव टू हैव वेरी गुड टाइपिंग स्पीड, दे गिव यू इनफ टाइम, बट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के साथ। अगर आप ईजी फील करते हो टाइप करना इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन पेपर, सो यू मस्ट गो फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पेपर बेस्ड आइल्स का रिजल्ट ऑलमोस्ट 12, 13, 14 डेज लग जाते हैं उसका रिजल्ट आने में, और अगर जो कंप्यूटर बेस है उसका आपसे 3 से 5 दिन में रिजल्ट आ जाता है। अगर आपको जल्दी है, अगर आपने कहीं पर एडमिशन किया हुआ है, आपको जल्दी चाहिए, तो यू मस्ट गो फॉर ऑनलाइन टेस्ट, एंड बिफोर यू जस्ट डू लिटिल प्रैक्टिस ऑन योर कंप्यूटर, टाइप समथिंग एंड राइट योर एसेज एंड दीज थिंग्स। ओके, नाउ लास्ट थिंग, last but not least, how to prepare. So I'm gonna give you very good advice, guys. किसी भी अरे गहरे टीचर के पास मत जाएं. They give you all wrong information about IELTS, and you're not gonna get good bands in IELTS. Trust me, trust me. They have no idea. आपको लगता है कोई एकेडमी है, जैसे बहुत अच्छी एकेडमी है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सब वहाँ जा सकते हो, वहाँ अपनी IELTS प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन किसी भी
एरे गहरे या एवं ही किसी टीचर के पास मत चले जाएं, उनको खुद कुछ पता नहीं होता और वो आपको मिस गाइड करते हैं। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो अगर उनको आंसर नहीं आ रहा होता तो वो एवं ही कोई गलत जवाब दे देंगे, जिसमें आप उनका जवाब सही समझ लोगे और वो बाद में आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। चूज वाइजली। अगर आप अकेडमी में तैयारी करना चाहते हैं तो कोई बहुत अच्छी अकेडमी चूज करें, नहीं तो आप इसकी घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग गाइस, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, if you are not able to speak confidently in front of examiner, so please first you have to work on yourself, you have to work on your English. आपको अपना इंग्लिश का लेवल अप करना होगा, आपको अपनी इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कि आपने कैसे बोलना है फ्लुएंटली, आपको ये सारी चीजें पहले अपनी बेहतर करनी होंगी, उसके बाद आप आइल्स की तैयारी की तरफ जाएंगे। सम पीपल से आई कैन डू इजीली द राइटिंग टास्क, आई कैन राइट एसे and I can find question answers from the passage. So it's not enough. You have to speak in front of examiner. Like वो आपको कोई भी टॉपिक दे देगा, कोई भी टॉपिक, आपको पता ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में, और वो कहेगा इसके ऊपर 3 से 4 मिनट 5 मिनट बोल के दिखाओ, इसके ऊपर बोलो, और आपने बोलना है, आपने रुकना नहीं है उसमें। अगर आप उस चीज़ को एग्री करते हो, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, जो भी टॉपिक हो, आप उसके क्या नुकसान है, फ़ायदे जो भी हैं, वो आपने उसके सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे है कोई और आपने वो बोलना है, लाइक इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर यू हैव टू स्पीक, और इंट्रोडक्शन एंड सो मेनी क्वेश्चन ही कैन आस्क एनी, वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है एंड यू हैव टू आंसर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप पहले अपनी इंग्लिश अच्छी करें, इंग्लिश क्लासेस लें, बेसिक इंग्लिश सीखें, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इंप्रूव करें, टेंसेस सीखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूव करें अपना, कि आपने कम्युनिकेट करना है वहाँ पे एग्जामिनर के साथ, और उसके बाद आप आइल्स की तरफ जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इनफ है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप इंग्लिश में अच्छे हो, अगर आपको लगता है, तो फिर आप आइल्स की तैयारी स्टार्ट करें। जैसे पास्ट पेपर्स, आइल्स पास्ट पेपर्स आप प्रिपेयर करें। प्रैक्टिस, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इवन योर इंग्लिश इज सो गुड, स्टिल यू नीड प्रैक्टिस, ट्रस्ट मी। आप प्रैक्टिस करें, आप पास्ट पेपर उठा लें, उसके बाद आप यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं जो आइल्स सिखाते हैं, जो आइल्स को मतलब बहुत अच्छी आइल्स की ट्रेनिंग देते हैं, और आप उनको फॉलो कर सकते हो। ऑनलाइन आप टेस्ट जो है वो ऑनलाइन बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन मेक श्योर किसी ऐसे ही बंदे को फॉलो ना कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक चैनल है असद याकूब, ही इज़ वेरी गुड इन आइल्स प्रिपरेशन, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अच्छा टाइम, अब कुछ लोग कह रहे होते हैं जी 3 days are enough for IELTS preparation, 5 days are enough. No, it's not like that. At least you give 1 month. At least 1 month you prepare. If your English is good, I mention again and again, if your English is good, then you give 1 month, and you prepare IELTS for 1 month, and then you are, I think, good to go. And make sure जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपना मोबाइल साइलेंट पे लगा के साइड पर रख दें, ठीक है? फोकस, ये सारी फोकस की गेम है, ये सारी फोकस। अगर आपका माइंड उस चीज़ में है तभी आप वो कर सकते हो। अगर आपका माइंड डाइवर्ट है, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो या साथ कोई और काम कर रहे हो, सो नो यू कैंट। अब जी इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सिंपल, यू गो ielts.com, उनके बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज में, आप जिस भी कंट्री में बैठे हो आप सर्च करो वहाँ पे ielts.com, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा उनका कुछ फॉर्म वगैरह, कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आपने फिल करनी होती हैं, उसके बाद फ़ी पे करनी होती है। फ़ी आप आई थिंक 1 दिन पहले भी पे कर सकते हो, बुकिंग आप करा सकते हो। जो ऑनलाइन होता है उसकी बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं आपको बुक करने के, लेकिन जो पेपर बेस होता है वो या तो 1 दिन में 1 दफ़ा होगा या 2-3 दिन छोड़ के, इस तरह से इट डिपेंड्स। फीस पे करते हो, बुकिंग करते हो, एंड नाउ इट्स डन। I try to cover all points about IELTS, and I hope मैंने सारे बेसिक पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू बिफोर, मैं इस वीडियो में हर पॉइंट को डिटेल से कवर नहीं कर सकती हूँ। सो we're gonna make another video, another for more points, like we make one video for speaking, one for writing, one for listening. It's like that, but this is basic information. अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो आपके माइंड में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा खुश रहें, आबाद रहें। जो लोग आइल्स कर रहे हैं ऑलरेडी,
और जिन लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है उनके लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बाय बाय।